गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। Prime Minister Narendra Modi has launched a sharp attack on the Congress party, accusing it of being overtaken by what he called an urban Naxal Maoist mindset that threatens India's national unity. Delivering the 6th Ramnath Goenka lecture in Delhi on Monday, PM Modi said that forces behind Naxalism and Maoist extremism, though declining across the country, appear to be gaining influence within Congress. He alleged that urban Naxals who entered Congress 10 to 15 years ago have now transformed the party into what he described as Muslim League Maowadi Congress. Modi claimed this alleged ideological shift has pushed Congress to give up national interest for self-interest, calling it a growing danger to India's unity. और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और साथियों, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। PM Modi also linked Congress to decades of Naxal violence, stating that the party has provided space to Maoist ideas that rejected the constitution and showed India's development. He contrasted this with what he described as the people's strengthening faith in democracy, citing the historic voter turnout in the recent Bihar Assembly elections. Highlighting the NDA's sweeping victory in Bihar, where it won 202 of 243 seats, Modi said the results reflect the public's desire for stability and development-focused governance. He added that voters now place their trust only in parties that demonstrate intent, integrity, and commitment to progress.